Hello everyone to my session on Odia 24/7 OPSC. This is the class for fundamental rights and DPSP appropriate questions, relevant questions for UPSC preliminary examination 27th October. नहीं कि 27th October ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ decisive day जो मैंने प्रिलिम प्रिपेयर हो तापाई डेफिनेटली गोटे इटा डिसाइसिव डे इट इज लाइक ए बैटल you are going to wage the battle and be one of the successful candidates for the mains examinations नहीं कि तो से आम जिते दूर संभव Odia 247 रे आम चेष्टा करी आसु प्राय मोस्ट ऑफ द मेजर एरिया रू आम कवर करिछु एवं शनिवार दिन गोटे कौन करा जीवो मैराथन करा जो कंबाइन रहिबो बेसिकली प्लान जो चैप्टर गुरा आम कवर कर दीचु केवल मेडिएवल एंशिएंट हिस्ट्री रो किछि किछि क्वेश्चन दरकार होउछि आ इंडियन कल्चर तो तुम मैंने सेटा प्रिपेयर हेई था आम देखुछु एथर को जदी हबो जो सैटरडे दिन जो क्लास हो सेतरे किछि किछि तुमको रेलेवेंट जोटा appropriate questions अच्छी जो गुरा हमरो medieval history हो ancient ऊपरे बा art and culture Indian ऊपरे तो से गुरा अच्छी ओडिशा history ओडिशा culture मु तो किसी सारा question तो मु देइची एथर को जो सैटरडे दिन जो सेशन हबो सेतिरे भी मु तुमको सेगुड़ा सब देबी निश्चित भाव में किछि किछि ओडिशा क्वेश्चन ओडिशा कल्चर ऊपरे किछि किछि जोटा रेलेवेंट अच्छी सेगुड़ा मु आनिकी तुमको से दिन डिस्कशन करेबी तो सैटरडे दिन आफ्टरनून सेशन रे जॉइन करो मैराथन Odia 24 ओपीएससी रो चैनल रे होप करछि कि एटा यूजफुल होतिबो तुम मानको ठीक अछि तो आरंभ करिबा हमें Odia 247 ओपीएससी रो एटा गोटे सेकंड अछि तो किछिटा क्वेश्चन अछि फंडामेंटल राइट्स और important questions जोटा appropriate questions OCS prelim पाई सेगुड़ा fundamental राइट ऊपर कौन क्वेश्चन अछि सेगुड़ा हमें देखिबा तो important questions on MCQs on FRS and DPSP for OPSC prelim 2023 ठीक अछि इंडियन पॉलिटी तो एटा हमें देखिबा कौन हमें क्वेश्चन अच्छी रखीचे जोटा हमें ताकू लक्ष्य करिबा ठीक अछि आरंभ करिया प्लान तल क्वेश्चन which of the following of the constitution of India has bearing on education ए टाइप रो प्रश्न प्राय आसुची जोटा तुमे लक्ष्य रखुतिबो बेसिकली जो गुडा सब माने यूपीएससी ओपीएससी एग्जाम रे टाइप रो क्वेश्चन बेसिस करी हमें देखियो को पाई थाउ तो से कहूची कहा पर गोटे बियरिंग अछि अर्थात को प्रिंसिपल गुरा एनवायरनमेंट ऊपरे बा एजुकेशन ऊपरे तार प्रभाव अछि बा ता विषय रे वर्णना कराई छि बा ता विषय रे किछि प्रोविजन सेतरे रही छि सेटा होची हैव ए बियरिंग ऑन एजुकेशन ऊपरे कार रही छि एजुकेशन तो डीपीएसपी रे प्लान बियरिंग अच्छी कि नहीं 48 ए रे अच्छी 48 एटा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हमर फॉरेस्ट लाइक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे अच्छी 48 एनवायरनमेंटल प्रिंसिपल टा तो सेटा गोटे हबो डीपीएसपी हबो फंडामेंटल राइट रे एक्सप्लिसिटली किछि एनवायरनमेंट रे ऊपर नाही जदियो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट कामाख्या प्रसाद साहू यस डी कहूछि कोन ऑल और फंडामेंटल राइट्स रो एनवायरनमेंट पर राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एजुकेशन राइट टू एजुकेशन अच्छी सॉरी राइट टू एजुकेशन हमें कहूचे 45 एटा होची 45 रे एजुकेशन कथा थिला डीपीएसपी रे आर्टिकल 45 आइटा आर्टिकल 21 ए प्रीएम्बुल रे एजुकेशन कोड आसला प्रीएम्बुल रे एजुकेशन ऑल केमति हबो प्रीएम्बुल रे एजुकेशन कोड आसीबो प्रीएम्बुल रे एजुकेशन किछ अछि कि नै तो तापरे फंडामेंटल ड्यूटीज रे अछि ड्यूटी नंबर के तले आंसर कोन अछि डज नॉट हैव ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द हैज बियरिंग ऑन तले 1 to 4 हबो टिरे 1 to 4 काई ऑप्शन प्रीएम्बुल एजुकेशन रो कोन अछि प्रीएम्बुल रे एजुकेशन रो किछ बियरिंग नै त आंसर प्लान 1 to 4 हबो तेरे ऑप्शन बोधे रखा जाए बाई चांस रहीनी तो 1 to 4 हम ये 1 to 4 है हम आंसर 1 to 4 कर दियो ठीक है तो ये एक्सीडेंटली मिसमैच हो
तो यहाँ एमती मन रख कि बियरिंग प्रिएम्बुल रे एजुकेशन ऊपर किसी डिस्कशन है प्रिएम्बुल रे एजुकेशन ने किसी मेंशन नहीं तो डीपीएसपी रे अच्छी फंडामेंटल राइट्स रे अच्छी फंडामेंटल ड्यूटीज रे भी एजुकेशन ऊपर बियरिंग अच्छी ठीक अच्छे तार मेंशन रही तो यहाँ 1 to 4 प्लान करवा आंसर तो यहाँ आंसर हम 1 to 4 प्लीज चेक इट द आंसर इज रॉन्ग तेणु दि जाए आदि ऑप्शन नहीं तो से यहाँ 1 to 4 हम ठीक अच्छे Which of the following constitution of India have a bearing on environment ऊपर जोटा कहूली तुमको environment ऊपर किए आसीबो environment ऊपर DPSP आसीबो आर्टिकल 48A फंडामेंटल राइट्स रे हमें सेमती एनवायरनमेंट ऊपर कहि परिबनी ठीक अछि आ फंडामेंटल राइट्स रे राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट गोटे इम्प्लिसिट राइट सेटा तो एटा भी गोटे हेई परिबो आर्टिकल राइट टू 21 ऊपर हेई परिबो एनवायरनमेंट ऊपर हेटा हेई परिबो एवं फंडामेंटल ड्यूटीज ऊपर भी हबो फंडामेंटल ड्यूटीज रे भी एनवायरनमेंट ऊपर डेट गोटे ड्यूटी अच्छी ड्यूटी नंबर G तो यहाँ आम कहवा 1 to 4 यहाँ भी आंसर आम रखिने तो एमती यहाँ गोटे यूपीएससी बोधे प्रीवियस ईयर किछिटा ऑप्शन भूल हो जाइए बट यहाँ आंसर मन रख 1 to 4 हम तो यहाँ जो 2 अच्छी 4 कर दिए 4 हेल्ले आंसर ठीक हम दीटा का भूल अच्छे ऑप्शन सेम थिला तो मन रख कि एनवायरनमेंट उपरे जदि आम आनिबा ताले 1 to 4 करि परिबा एटा इम्प्लिसिट हेले भी बियरिंग अछि कारण राइट टू लाइफ रे एनवायरनमेंट गोटे मेजर रोल प्ले करूची तो सेटा आम एमती करि परिबा 1 to 4 तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आसी पारे कोटा एनवायरनमेंट उपरे को पार्ट अछि कि एजुकेशन उपरे को पार्ट अछि 7 शेड्यूल हला 7 शेड्यूल टा भी एजुकेशन उपरे अछि एजुकेशन टा कनकरेंट लिस्ट रे अछि तो एमती भी क्वेश्चन आसुची कि कहा पर कोटा प्रभाव अच्छी कहा पर कोटा रिलेटेड अच्छी तो सेटा देखिया पे भी प्रभाव आसुची ठीक अच्छे तो यहाँ टे भल से नजर करथिबो तेपर आसीबो हम प्लान नेक्स्ट क्लास को नेक्स्ट क्वेश्चंस एगुरा सब माने कौन निज द्वारा तैयारी होता क्वेश्चन गुरा ओरिजिनल क्वेश्चन जोटा मैं एक्सपेक्ट करूची मु कि गुरा सब तुमर आसीपारे परीक्षा रे आसीबार संभावना अच्छी बोली सेटा मु ये करूची तो सेति पई एटा जेन्युइन क्लास गुरा जोटा तुमे निश्चित भाव में किछटा क्वेश्चन यूजफुल पाइबो बा तुमर जो कांसेप्ट क्लियर हो तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट्स हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग of the statements are correct following statements is are correct right to privacy is now a fundamental rights under article 21 yes that is right 21 under right to privacy mention कराइज it is explicitly provided in the constitution no explicitly provide कराइनी सेमती लेखा हिनी सेति पे गोटे अमेंडमेंट हेनी कि ऐड कराइनी जेमती राइट टू एजुकेशन ऐड हैला पूरा 21A रे सेमती प्राइवेसी टा ऐड हेनी जदियो सेटा को सुप्रीम कोर्ट कहिसंती कि एटा राइट टू प्राइवेसी एवं सेति पे डीपीडीपी कराइछ डिजिटल प्रोटेक्शन और कोन डाटा प्रोटेक्शन जो डीपीडीपी एक्ट 2023 कराइछ स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दवा पे राइट टू प्राइवेसी को डीपीडीपी नहीं कि डीपीडीपी सेटा टी हां डीपीडीपी आउटला आर्टिकल 12 ऑफ द यूडीएचआर कोन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights contains right to privacy इटा ठीक अछि तो थिरे भी सेमती हमें देखुचे 1 and 3 are correct it is not explicitly provided तो 1 and 3 इटा आंसर हो बी टा इटा को हमें 3 कर देबा 1 and 3 बहुत ऑप्शन भूल रहउछ कहीं रे 1 and 3 तल बी हो आंसर प्लीज चेक इट 1 and 3 हम 1 and 3 जोटा हमें बी रखीचे 1 and 3 आंसर हम प्लीज रेक्टिफाई इट 2 नंबर टा भूल अच्छी कारण राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशन रे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन रे एक्सप्लिसिटली माने कौन एक्सप्लिसिटली माने जोटा डायरेक्टली मेंशन हेतिबो इम्प्लिसिटली माने जोटा मेंशन हे नथिबो किंतु हमें ताकू मानुचे बता कहूचे जमती धर फ्रीडम ऑफ स्पीच रे प्रेस फ्रीडम टा जो गणमाध्यम स्वाधीनता गुरा सेटा कौन इम्प्लिसिट माने व्हिच आर इम्प्लाइड
not visible, but not we can study that, we can guess that, but we can get implicit idea, but not explicit idea. तो ସେଥିପାଇଁ ସେଟା implicit ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଠିକ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତ 1 and 3 answer of 1 and 3 are correct. 1 and 3 are correct. How many of the following of the statements is are correct? How many of the following statements is are correct? DPSPs are not enforceable in nature. DPSP are enforceable nuhe. And they are federal in nature, as both center and states can implement these principles. Most of the principles are being implemented in the country at present. The constitution contains 3 types of principles. कोटा ठीक है, इटा कोटा ठीक है। Yes, आदर कोटा ठीक है। नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया अच्छी खिरोत। किशोर किशोर बरा, yes, बढ़िया अच्छी बढ़िया अच्छी, ठीक अच्छी चंगा अच्छी। बाकी सब देखा जीवा हमर करिश्मा उपरे केते दूर आडा 247 रे आमे आकर्षण करि परछु पिलांको नै कि पिला के दूर ऑफलाइन छाडी के ऑनलाइन को आछंती एवं सेम क्वालिटी सक्सेस पाउछंती, सेटा हमर देखिबार अछि। ठीक अछि, त एतर कोटा ठीक हबो। प्लान देखो, DPSPs आर नॉट एनफोर्सेबल, एटा ठीक अछि। They are not enforceable in nature. They are federal in nature, as both center and state can implement it. से माने दी जन जाको को implement करि परिबे, हैला। जे कोनोसी SC ST पे वेलफेयर स्कीम ए माने करिवे, से माने करिवे, तन दी जन एटा ठीक हबो। Most of the principles are being implemented in the country at present, एटा ठीक अछि। Most of the principles देखिबा हमें आर्टिकल माने प्रिंसिपल आरंभ होची केतेरु 38 रु 51 जो प्रिंसिपल गुरा हमें देखु छे। 38 रु प्रिंसिपल 51 आर्टिकल जो आर्टिकल गुरा अछि, जो DPSP रे जो प्रोविजन गुरा अछि सब इंप्लीमेंट हेलानी। प्राय केवल यूनिवर्सल सिविल कोड सेटा टिके रही छी, आर्टिकल 44 टा रही छी, नले प्राय ऑलमोस्ट ऑल प्रोविजन पई जो हमर सोशलिस्ट प्रिंसिपल अछि, गांधीयन प्रिंसिपल्स अछि बा लिबरल प्रिंसिपल्स अछि, समस्त को पई लॉ हेई गरानी। बहुत सारा प्रोविजन बा बहुत सारा लॉ तयारी छी, बहुत सारा प्रोग्राम्स बा पॉलिसीज डिक्लेयर हेई छी। तो मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड कहिले भूल हबन। मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द कंट्री, स्टेटमेंट भूल न, कारण कहल ना केवल आर्टिकल 44 को छाड़ी देले प्राय सब हो सारी। प्राय केवल जो काउ स्लॉटर है, काउ स्लॉटर ऊपर जो अच्छी सेटा गोटे प्रोविजन अच्छी जोटा सेटा ही पारनी विशेष किछि एगुरा टिके रही, बट प्राय तो सब प्रिंसिपल गुरा लेटर एंड स्पिरिट रे इंप्लीमेंट हेछि, तेणु सेटा DPSP रो गोटे स्टेटमेंट ठीक हम। बाकी द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ, एटा भूल हम, कारण कॉन्स्टिट्यूशन रे 3 टाइप्स रो जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है कि जो हमर तुमे कहूछ कोन जो गांधीयन प्रिंसिपल है कि लिबरल प्रिंसिपल है, एगुरा मेंशन कराइनी। एटा हमें ताकू जो एनालिस्ट माने हेले, जो माने राइटर माने बा पॉलिटिकल साइंटिस्ट माने, से माने डिवाइड करछन्ती डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स। एवं किछिटा तुमे मन रखिबो ओवरलैपिंग प्रिंसिपल भी अच्छी, जेंति 43 हला, 47 हला, 48 हला, तेणु बहुत सारा ओवरलैपिंग प्रिंसिपल भी रही। तेणु सेटा हमर डिवीजन, सेटा कॉन्स्टिट्यूशन ने किछि डिवीजन ही निसंती, तो एटा भूल हबो। त माने 1 2 3 आर करेक्ट, ए ठीक है। 1 2 3 आर करेक्ट, सेटा होची ए रहिबो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए रेड नोवा। तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 21 इज आर करेक्ट? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट्स, ये चलची हो, ठीक है। ओनली सिटीजन्स कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट प्रोसीजर लेट डाउन अंडर द, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करो, इट ऑफ द भूल टच कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ
the life except procedure laid down under the law. Right to protection against arrest and detention is also provided in the article. Right to livelihood and shelter are also intrinsic to 21. Intrinsic mane kon internal. So how many of it are correct? Keteta abitru correct अछि? Can you guess that? Abitru keteta correct अछि? Anybody? Huh? कोटा जानी परछ कोटा आंसर हबो कहि दिए एटा जे जानी परछ कहि दिए कोटा आंसर हे परिबो तो जो अछि हमर only citizens cannot be deprived of his or her life except procedure laid down under the law. Right to protection against arrest and detention is provided in the article. एटा को ये अछि एटा को माने कोथरे आछि एटा जो प्रोविजन टा ओके एटा को प्रोविजन रे अछि वर्तमान एटा हमर जो कहूचे एटा को प्रोविजन रे अछि बेसिकली बी अच्छा बी माने कोटा गोटे मिनिट रो गोटे मिनिट ओके तो ये मुझे कौन कहती तुमको यहाँ कौन कही आंसर बी माने 3 ओनली अच्छा ओनली सिटीजन्स कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और लाइफ एक्सेप्ट प्रोसीजर एटा भूल अछि एटा ऑल पर्सन्स माने सिटीजन्स आउ एलियंस आर्टिकल 21 टा सिटीजन और एलियन उभय मान को देखा जाउछि एटा जणो पाइनो तो ऑल पर्सन्स तापर हला तुमर कोन एटा नै जीव हमर एटा तापर देखिबा हमें कि एटा ऑल पर्सन्स हबो ऑल पर्सन्स एटा भूल अछि right to protection against arrest and detention is provided in this article no it article 22 रे अछि right to livelihood and shelter is there तो ये गोटे ठीक अछि आंसर इज बी वेरी गुड आंसर इज बी बुझि परछ तो तापरे केते नंबर आंसर क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखो उडा नेला हो कहलु एटा ठीक है which of the following statements is are correct about sub-categorization जोटा प्लान बे recent news रे आसी sub-categorization the Supreme Court upheld the constitutional validity of sub-categorization of SC and ST in state of Punjab versus Davinder Singh case 2024 ए केस ता मन रखतिबो ए केस ता कोन एटा ठीक अछि स्टेटमेंट Davinder Singh versus state of Punjab केस रे सब कैटेगराइजेशन रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन जो रिजर्वेशन जो एप्रोप्रिएट रिजर्वेशन पई जो सब कैटेगराइजेशन कराई सब कैटेगराइजेशन माने बुझी परछ तो जो माने क्रीमी लेयर ताको काढी दिया जी एवं जो माने रिजर्वेशन पई डिजर्व धर एससी लोक हला एससी लोकटा जदि डिजर्व ताले से रिजर्वेशन नबो जदि से इकोनॉमिकली वेल ऑफ जदि से निजे गोटे भल चाकरी बाकरी करछि बा गोटे वेल ऑफ साउंड अछि फाइनेंशियल साउंड अछि ताल सी किंबा ता पिला माने आ एजुकेशन रिजर्वेशन नेबे नाही तो एटा ठीक अछि ए केस नाटा भी मन रखो स्टेट ऑफ पंजाब दाविंदर सिंह केस 2024 The court's opinion provided clarity on the relationship between the reservation in Article 16 and efficiency in Article 35. तो इटा ठीक अछि कारण आडे रिजर्वेशन कथा कुआउछि आडे 335 रे कुआउछि जे claims of SC and ST would be heard by the government without compromising the efficiency. तनु रिजर्वेशन रो लक्ष्य नो कि efficiency को compromise करिकि रिजर्वेशन दे सी एससी हो एसटी हो जनरल हो बा वुमेन हो जो माने भी आईएएस हेबे कि ओएस हेबे से मानकर कैपेबिलिटी थिबा दरकार तेनु एफिशिएंसी को कंप्रोमाइज करा जीवनी तेनु सुप्रीम कोर्ट रे जजमेंट
एफिशिएंसी वर्सेस रिजर्वेशन ऊपर गोटे कंप्रोमाइज आणुची बोली कुआ होची एटा ठीक अछि एटा ठीक अछि त माने बोथ आर करेक्ट सो आंसर बी हबो बोथ आर करेक्ट आंसर बी हबो ठीक अछि एटा बोथ आर करेक्ट बुझियला एटा बहुत बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा तो को केस रे कुआ गला कोन हला एटा देखिबो 6 नंबर क्वेश्चन एटा बहुत भलो अछि बी नेक्स्ट आसी पिलाने नेक्स्ट आसी हमें 7 number. Consider the following statement. There is no provision in the Constitution of India for reservation in the matters of promotion in the services under the states in favor of scheduled caste and scheduled tribes. Second statement, as per provisions of the Constitution of India for getting reservation for the appointment and post under the state, a class must be backward and should not be adequately represented in the Constitution of in the services under the state. Could have answer ही परियो. Okay, कोटा आंसर ही परियो कहो. Which of the following is an answer? এটা এসকে রাউতর নিজ কোশ্চেন রে বাবা এটা এসকে রাউতর নিজ কোশ্চেন এটা নিজে তৈরি করছেন স্যার বুঝি পারছো তো তো এটা কোনসি ইয়ে নো तो पिलाने आंसर এটা কোন কହୁଛୁ आंसर ओनली 3 কହୁଛୁ मधुसूदन ओनली 3 कौच ओनली 3 एटा तो अगर नहीं 7 नंबर टा कौच अच्छा देखे एटा ठीक अछि एटा कन 16 4 ए रे अछि प्रमोशन पई कहछि जदियो पछरे ताको सुप्रीम कोर्ट मना करतला किंतु गवर्नमेंट अपहेल्ड रखिस ताको सेटा प्रमोशन रे भी क्लेम निया जाय सुनते नै जे निया होबनी एवं एटा भी ठीक अछि गोटे क्लास बैकवर्ड क्लास केते बळ हबो रिजर्वेशन किए नबो ना सी बैकवर्ड क्लास हेतिबो बैकवर्ड क्लास माने एससी एसटी ओबीसी आउ तांको संख्या सर्विसेस रे एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नथिबो परसेंटेज कम थिबो धरा जो गोटे एससी कम्युनिटी हला गोटे राज्य रे एससी कम्युनिटी संख्या हला 20% कि 25% किंतु सेही एससी लोक मानकर सरकारी चाकरी रे परसेंटेज हला 10% बा 5% ता माने बहुत लो अछि रिप्रेजेंटेशन ताले रिजर्वेशन दे जो तो रिजर्वेशन होची दीटा कंडीशन गोटे हला द क्लास मस्ट बी बैकवर्ड एंड दैट सेकंड हला कोन शुड नॉट बी एडिक्वेटली माने कोन सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज ताले दीटा को ठीक अछि बोथ आर करेक्ट बुझि परछ बोथ आर करेक्ट ठीक अछि ना नहीं क्वेश्चन गुरा अछि तो एमती सारा क्वेश्चन गुरा देखिया दरकार केमती क्वेश्चन देखिले हबो एटा खाली जे एग्जाम रे आसीबो बा न आसीबो सी अलग कथा किंतु सब्जेक्ट को भिन्न भिन्न वे रे क्वेश्चन फॉर्मेट रे हम डील कले हमर कांसेप्ट क्लियर हबो एवं हम बुझी परियो जिंसटा जे एटा एमती जिंस क्वेश्चन बुझी हबो सिविल रे सेति पे हम क्वेश्चन गुरा दोउची केतेटा पढिबो न पढियो सेगुरा सब जिनस विश्वास रखेनी कारण क्वेश्चन जहाँ भी आसू जन बुझीथिव माने से जमतेल करदेव तो एक्जाक्ट क्वेश्चन आमर बाजीगला आम 10टा बजे देलु 15टा बजे देलु 30टा बजे देलु सेगुड़ा गोटे म्यूचुअल एक्सीडेंटल कोइंसिडेंस दैट आई डोंट बिलीव जो एक्सीडेंटल कोइंसिडेंस ऊपर मु विश्वास रखेनी मेजर है मोर कॉन्सेप्ट है कौन पिलाटा जदि कॉन्सेप्ट बुझीगला पाठ ठीक से पढ़ला और सब प्रकार क्वेश्चन को डील करिया को तार माने गोटे तापाके गोटे मोरल बूस्टर थिबो ताले सी सब एग्जाम रे भल से भल परफॉर्मेंस करिक आसीबो सिविल रे तो सेटा हम कहूची तो सिविल हैला गोटे कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहया दरकार एतरे क्वेश्चन कोन आसीओ मैटर रखेनी एतरे होची तुमे केतेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होउछ जिनसटा ओरा सब गोटे गोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होबा दरकार ठीक अछि नेक्स्ट आसो क्वेश्चन नंबर 8 Consider the following statement. Article 17 is available only against state. State माने सरकार. State definition टा जो अच्छी हमर article 12 रे और 36 रे तार अर्थ कौन 12 36 रे कौन कहूँ State refers to everyone
that is related to government, central government, state government, local government, institutions, public bodies. Even a private body is also a state if it performs the duties of the state or on behalf of the state jodi kaam kare. Then according to Supreme Court, a private company or a private body can also be considered a state if it performs public duties or public functions. तो सेटा भी पर तो माने state has a broader definition in the constitution under article 12 and under article 36. तो से कहछि article 17 is available only against state. Second statement of the Supreme Court in the People's Union Democratic Right case 1982 declared that the right is also available against individuals. The provisions of protection of civil rights 55 are available both for state, non-state actors and individuals. कोटा ठीक है कोटा ठीक है Which of the following will be correct? First देखो बोलाने Article 17 mainly तीनिटा article fundamental rights जोटा व्यक्ति against रे भी था कोटेला आर्टिकल 15, 17, 23 15, 17 और 23 ये तीनटा मन रखता व्यक्ति अगेंस्ट रे था 15 रे कौन अच्छी कह 15 अच्छी नो डिस्क्रिमिनेशन अर्थात नो पर्सन शैल बी नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ एवं सेटा व्यक्ति पाई भी लागू हो खाली सरकार पाई लागू होनी सेटा व्यक्ति पाई भी लागू हो व्यक्ति तार भी केनता माने हमें कहा को भेदभाव करि परिबानी इन पब्लिक प्लेसेस हला पब्लिक सर्विसेस हला सब कोथरे डिस्क्रिमिनेशन करा हबनी सपोज जदि हमें ओटे होटल खोलिबा कि ओटे रेस्टोरेंट खोलिबा सेठी हमें लिखि परिबान जे एई कम्युनिटी रो लोक मो होटल ले खाया को आसीबेनी हम निज घरे आम डिस्क्रिमिनेट करवा से अलग कथा किंतु आम बाहर कौन सी जगह बेपार वाणिज्य कले क्या पातर अंतर कर तो 15 आउ 17 आउ 23 अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट तेणु से भूल हम स्टेटमेंट भूल हम स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड अनदर थिंग इज योर कौन जो रही हमर the Supreme Court in the People's Plan एटा ठीक अच्छी केस टा ना बोल रखो People's Union Democratic Rights Case 1982 रे एथिरे सुप्रीम कोर्ट कहले कि जो आर्टिकल 17 टा दी जन को अवेलेबल अच्छी स्टेट को आउ इंडिविजुअल को अर्थात कहीं भी आर्टिकल 17 कौन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज बैंड प्रोहिबिशन तो आमे सरकार जमती कहा को भेदभाव करबनी बा अस्पृश्य बोली कहबनी सेमती व्यक्ति हिसाब रे भी आमे का को अस्पृश्य कहि परिबानी जो जाति प्रथा थिला जो जाति धर्म भितर जो पार्थक्य थिला एवं उच्च नीच जो भेदभावटा थिला सेटा को संपूर्ण बैन कराइছে এবং सेटा व्यक्ति मानिबो सरकार भी मानिबो तो एटा ठीक अछि एटा भी प्लान ठीक अछि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जोटा आगुरु अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट 1955 थिला 1976 मसिया रे ताको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट करा गला सेतिरे बहुत सारा पेनल कंडीशन रही छि कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कले कोन कोन दंड मिलिबो सेतिरे सब लिखा हिछि तो सेटा व्यक्ति आ राष्ट्र आ नॉन स्टेट एक्टर्स माने कोन नॉन स्टेट एक्टर्स हला जोरा सब अनसरकारी संस्था गुरा सब एनजीओ हैला प्रेशर ग्रुप हैला इंटरेस्ट ग्रुप हैला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैला एरा सब नॉन स्टेट एक्ट त माने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट समस्त पई लागू हो तो एटा ठीक अछि एटा ठीक त माने ओनली 2 and 3 सी इज द आंसर देखाओ ठीक से नहीं हां क्वेश्चन ठीक अछि ना नहीं कहो जाले किछटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि नहीं जो क्वेश्चन गुड़ा आम सब एत एमसीक्यू देखिले अड्डा 247 रे गदा गदा देखिले तो ताटू ये डिफरेंट कि नहीं डिफरेंट ओरिजिनल क्वेश्चन बनैबा दरकार पॉइंट बुझुस तो खाली इंटरनेट रु डाउनलोड करी आनी पुळे हो गल हबनी निजे क्वेश्चन बनै के जदी तुमको कुहाउची ताल से
से मास्टरटा कंपटीशन पढ़ेबार योग्यता रखी बा से पढ़ाऊँ बुझे निजे क्वेश्चन बन की दबा दरकार केते भेराइटी एंगल रे क्वेश्चन हो पार एटा आंसर कौन है सी है ठीक अच्छे आसवा आम नेक्स्ट क्वेश्चन को As far as the armed forces are concerned, the fundamental rights granted under Article 14 and 19, equality before law and equal protection of law, and 19 ने जो 6टा फ्रीडम रही एगुरा जो आर्मेड फोर्सेस होती डिफेन्स फोर्सेस एप्लिकेबल कि नहीं से कथा पचार नॉट अवेलेबल एट ऑल सेमती नुह भी मिल अवेलेबल टू द आर्म फोर्सेस नॉट टू द अदर फोर्सेस सेटा भी भूल आर्म फोर्सेस हो पारामिलिटारी फोर्सेस हो पुलिस हो से गोटे टाइप रेस्ट्रिक्शन रही अवेलेबल ओनली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नो सेमती किछि नहीं अवेलेबल ओनली अकॉर्डिंग टू द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट इटा ठीक अछि जति भाई पार्लियामेंट आर्मी एक्ट करिछि 1950 एयरफोर्स एक्ट 1950 नेवी एक्ट 1950 बहुत सारा एक्ट हिच तेणु को फंडामेंटल राइट आर्मेड फोर्सेस मान बा डिफेन्स फोर्स रेस्ट्रिक्शन हम सेटा कहई सेटा हूँ कथा से अच्छी तेणु आंसर डी हम से पार्लियामेंट डिसाइड कर कोटा दिया हम कोटा दिया हम डिपेंड कर पार्लियामेंट एक्ट उपर ठीक अच्छे Consider the following statements and state how many of them are correct. How many of them are correct? Right to freedom of speech and expression is under Article 19(1)(a). This freedom is restricted under the grounds of provided in Article 19 Clause 3. Originally, Article 19 contained 7 freedoms. It is easy question. Ku question habo. It is easy question. Consider the following statements and state how many of them is are correct. तो ठीक अच्छी कि नहीं ठीक अच्छे ताले इटा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अंडर करेक्ट एटा ठीक अच्छी एटा भूल अच्छी कारण एटा 2 हबो क्लॉज 2 रे अच्छी 19(1)(a) टा 19(2) अंडर रेस्ट्रिक्ट होची 19(1)(b) टा 19(3) अंडर रेस्ट्रिक्शन होची 19(1)(c) टा 19(4) अंडर होची बुझे आ 19 रो डी और ई टा 5 अंडर होची डी और ई दिटा आ एफ टा 6 अंडर होची तो सेमती अछि ता तो आर्टिकल 19 कंटेंट ओरिजिनली 7 फ्रीडम्स कंटेंट करछि एटा ठीक अछि ओरिजिनली माने कोन 1950 रे एवं जोटा राइट टू फ्रीडम टू होल्ड प्रॉपर्टी सेटा अबलिश इज 44 रे 33 जो 19(1)(f) और 31 ये दीटा को गोटे अमेंडमेंट रे अबलिश इज राइट टू प्रॉपर्टी तो तमाने 1 ठीक और 3 ठीक तमाने ओनली 2 आर करेक्ट सी ओनली 2 आर करेक्ट सी ठीक अच्छे नेक्स्ट आसीबा में Consider the following statements and state how many of them are correct. Protection against self-incrimination is provided under Article 23. Extends to both oral evidence and documentary evidence. However, it does not extend to compulsion to give thumb impression, specimen signature, blood specimen. It extends to both civil and criminal cases. कोड़ा ठीक है ठीक है मधुसूदन दैट एफर्ट विल गो ऑन ठीक अच्छे कारण आम देखे आम यहाँ सिविल प्लाटफर्मटा तैयारी गोटे ऑर्डिनरी कथा नुह खाली यूट्यूब रे हो कि प्लाटफर्म तैयारी करदेले एमती आम क्वेश्चन कहीदेबू एमती पास करदेबू यहाँ कहीकि जो सिविल ना रे ठकामी करहबनी
तुम एसएससी हो कि एनटीपीसी हो जहाँ भी हो एगुड़ा तुम्हें कौन कौन कहीकि कहीदेव किंतु सिविल नारे एत होआ कि पिला से आसबे ये कम व्यूअर अच्छा ये तुम केतजन पिला देखुच बुझीपार ना नहीं किंतु गोटे गोटे एसएससी ये से बहुत पिला भ्यू करती किंतु सेटा मैटर न मैटर होती से मैंने आसबे जो मैंने एक्चुअली सिविल कैरियर गढ़िया को चाहूबे सिविल एक्चुअली यूपीएससी बा ओपीएससी को हो बा यूपीएससी को क्रैक करिया को चाहूबे से माने एटा को आसबे से एनालिसिसटा ही ये कम दब अन्य मैंने आसले बोर हे जो मैंने सिविल ओरिएंटेड नुह से बुलेबे कि पॉलिटी कहले गोटे तो क्वेश्चन वन ऑप्शन वाला क्वेश्चन देदेले हो जीवन वन ऑप्शन वाला टी मैटर नु मैटर होची केते कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आछी बड़ जिनस ठीक अच्छे अच्छा देखो यहाँ जो अच्छी 20 3 ठीक अच्छी सेल्फ इनकम 20 3टा क्लॉज अच्छी गोटे नो एक्सपोस्ट फैक्टर लॉ नो डबल जियोपाडी नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन ए सेल्फ इंक्रिमिनेशन माने कौन निजर जो आत्म असम्मान कहबा सेटा से देइची 23 रे एटा बोथ ओरल और डॉक्यूमेंटरी एविडेंस को एप्लीकेबल होउछ कारण जने लोक को बाध्य कराई परियो बोली से कहउछ किंतु एटा जोटी कंपल्सन थिबो जोटी दरकार हबो सेटा जने दबाकू बाध्य थंब इंप्रेशन हो स्पेसिमेन सिग्नेचर ब्लड स्पेसिमेन जोटी पुलिस कहिबो जोटी अति संगीन केस हेतिबो बा अति मर्मन्तुद किछि गोटे घटना घटितिबो सेठी बाध्य हबो बोली कुहाउछ इट एक्सटेंड्स टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल एटा खाली क्रिमिनल केस को आसे सिविल केस को आसेन आर्टिकल 23 ला 20 रे जो प्रोटेक्शन ता देछि एटा सिविल केस रे नो क्रिमिनल केस रे ठीक अच्छे तो यहाँ से केवल ओनली वन इज करेक्ट ए ओनली ए इज करेक्ट ठीक अच्छे ओनली ए इज करेक्ट देखियो तापर हम आसवा जो क्वेश्चन टा अच्छे हमर Which of the following acts related to Article 23 of Indian Constitution? कोटा 23 सहित रिलेटेड अच्छी ये कही परिबो कह टिके देखिबा 8 नंबर ना केते नंबर एटा 12 नंबर क्वेश्चन कही परिबो कह क्वेश्चन विजिबल होउची समस्त पिला ने ठीक से एटा कोन एंटी क्वेश्चन गुरा करले तुमको सिविल रो आउटलुक तुमर ब्रॉड हे जिवो एटा मोर व्यू है सहीटा बुझीपार मु तुमको प्रिलिम पे एते माने प्रिलिम तो ऑटोमेटिक सेटा बाईपास हे जिवो ओटा बुझीपार कटक रु पुरी गला बेले तू बाईपास दे कि जेमतेले जिवु तो सेटा बड़ कथा नु कटक रु पुरी रास्ता जानिथिबु बा भुवनेश्वर रु पुरी रास्ता जानिथिबु ताले बाईपास तो ऑटोमेटिक बाटे रे आसीबो त प्रिलिम टा बाईपास जे कंप्लीट प्रिपरेशन होथिबो ता पई प्रिलिम ही कटिबो एटा मन रखता प्रिलिम रिस्क न थाए केतबे मु 10 मो पाखापाखि 4 थर प्रिलिम दे 4 थर कोटा विश्वास रख न रख 4 थर जाके क्वालिफाई होइछ बुझिबछ ने तेनु मो कहता कोन कहलु प्रिलिम टा इट्स नॉट ए रिस्क जदि तू प्रिपेयर होउछ प्रकृत रे प्रिलिम ही कटि जिवो तोर एमती बाय चांस केतबे कोडी को चांस रे तोर ओटे कोडी कोन ओटे माने प्रॉब्लम हे गला कि क्वेश्चन तो जानि पालनी कोन दे के एपट सोटे तो कट पटी गला सेटा बहुत रेयर तो एगुरा सब हेले करबो ना तुमको मेन पर्सपेक्टिव रे दबो मेंस पर्सपेक्टिव दोउची प्रिलिम टा माने कोन प्रिलिम रे जे थरो एमसीक्यू रे से मेंस रे पूरा एग्जैक्टली लिखियो एटा मन लगता तो ये से कहूँ आर्टिकल 23 सहित को एक्ट रिलेटेड नहीं आर्टिकल 23 रे कौन अच्छी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कौन प्रोहिबिशन ऑन बॉन्डेड लेबर और कौन ह्यूमन ट्रैफिकिंग बॉन्डेड लेबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग ए दुटा मेन तो सब जाक से सब अच्छी सब बॉन्डेड लेबर एक्ट कराई इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट कराई कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट एरा सब 1976 रे 1976 एरा सब ता पे कराई ना ऑल इटा डी हब आंसर भल से देख ईयर गुरा भी दे दी से अनुसार पकई दब ठीक अच्छे The Unlawful Activities Prevention Act was enacted in
पहले एटा रिसेंटली अमेंड हेची 2019 रे अमेंड हेची पुनी पछरे परे भी तक ये करा हेची तो सेति पे एक्ट एक्टिव अछि वर्तमान एटा प्रथमे 1967 रे करा हेतला एटा ए एटा 2004 2008 रे भी अमेंड हेची 2004 रे भी अमेंड हेची 2019 रे अमेंड हेची बहुत तरह एटा कोन एटा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ एटा जो आर्टिकल 22 रे अछि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ एटा उपा उपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आकु कहती उपा इसको उपा कहते हैं उपा ठीक है छी नेक्स्ट आसीबा में which of the following statements with regards to fundamental rights of the minorities in educational matters. The minority has only the right to administer the educational institutions. The minority has the right to establish and administer educational institutions. The right is absolute and not subject to restrictions. Reasonable restrictions may be imposed to promote efficiency and prevent maladministration. भलसे देखे एटा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन टा एटा जदि तू बुझी परिबु तले आराम से कर दो भलसे देखे फर्स्ट से कौन कहले द माइनॉरिटी हैज ओनली द राइट टू एडमिनिस्टर त माने एस्टैब्लिश के करिवो बुझियो जे जे जी एस्टैब्लिश करिवो सी एडमिनिस्टर करले भलो त केबे गोटे जिंस बे दबनी जने एडमिनिस्टर करिवो आ जने एस्टैब्लिश करिवो तेनु माइनॉरिटी मानन को आर्टिकल 30 रे राइट टू एडमिनिस्टर एंड एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कथा दिहाइछ भूल कहूँ ना ठीक कहूँ बुझिपार आर्टिकल 30 रे आर्टिकल 30 रे जो राइट टू एडमिनिस्टर्स ठीक अच्छे एगुरा सब दिखाई ताने एटा ठीक हम एटा भूल हम राइट इज एब्सोल्यूट मन रखते एब्सोल्यूट किछि नुह एब्सोल्यूट माने कौन दैट कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड नथिंग इज एब्सोल्यूट इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम कौन सी जिनस एब्सोल्यूट नुह हमर सब जिनस देख फंडामेंटल राइट तो एब्सोल्यूट नु फंडामेंटल राइट भी एब्सोल्यूट नु कितने बड़ राइट से माने एब्सोल्यूट हेले कौन हम मुना अनार्की पळे आसीबो डिक्टेटरशिप पळे आसीबो नॉर्थ कोरिया भलिया बुझिपारछ एब्सोल्यूट नु किछ डेमोक्रेसी रे कोनोसी जिनस एब्सोल्यूट न तनो एटा पूरा काटिबो एब्सोल्यूट माने काटिबो किछ देखिया दरकार रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मे बी इम्पोज्ड टू प्रमोट एफिशिएंसी एंड प्रिवेंट मैलवेयर एटा ठीक अछि एका सब जिनस रे त माने 2 and 4 are correct B got it now we'll come to next question which of the following statement is a correct of the writ of prohibition it is an order issued by the high court of commanding a lower court to case to cease from proceeding in some matters not within its jurisdiction it can be claimed by an aggrieved party as a matter of right एटा इंटरनल टा एटा एग्रीड पार्टी नहीं कि किछि जीवा दरकार नहीं एटा जदी प्रोहिबिशन टा काहे के आसे एटा लोअर कोर्ट जदी अधिक काम कर देथिबो सेटा हायर कोर्ट कहबो सेटा अधिक करछि बोली ओटा कॉमन लोक केम जानिबो मु कहि भाबुन सेटा एटा ओनली वन हबो देखि दो सेटा कोन प्रॉब्लम थे मते कहबो ए रिट ऑफ प्रोहिबिशन ठीक अछि नेक्स्ट आसीबा 15 नंबर गला 16 नंबर को आसीबा which of the following preventive detention law is not in existence at present आ भितरु को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ टा वर्तमान नाही बोली से कहूछ त माने सब जगह प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ मिसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट COFEPOSA conservation of foreign exchange and prevention of smuggling activities conservation of foreign exchange and prevention of smuggling activities act 1974 एटा तो कहली उपार अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट
नासाला नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ता भीतर को एक्ट एक्टिव नहीं अर्थात आबोलिश हो जाए एटा आबोलिश हो जाए 74 ना 78 रे आबोलिश हो जाए मिसाटा आंसर ए हम Question number 17 under the Indian Constitution which one of the following is not a specific ground on which the state can place restriction on freedom of religion freedom of religion article 25 clause 2 रे तीनटा जिनस रेस्ट्रिक्शन बसे गोटे है पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी हेल्थ ताने सोशल जस्टिस नुह तेणु आंसर सी हम जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अच्छी आर्टिकल 25 रे सेटा एब्सोल्यूट नुह यस 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 सेटा एब्सोल्यूट नुह सेटा एब्सोल्यूट नुह माने सेटा तार पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी धर्म ना रे तुम विशृंखला सृष्टि करिवो अनैतिक अनीति प्रसार करिवो जो बाबाज माताज एरा सब अरेस्ट होचन सो कॉल्ड बाबाज माताज एरा सब अरेस्ट होचन काहे की कारण से धर्म ना रे अपप्रचार करछन धर्म ना रे पब्लिक ऑर्डर नष्ट करछंती लोकन भितरे अनीति अनैतिक वातावरण सृष्टि करछंती सेटा हेल्थ ग्राउंड रे भी सेटा रेस्ट्रिक्शन हुए कि सोशल जस्टिस इज नॉट ए ग्राउंड तो सेटा आर्टिकल 25 क्लास 2 रे रेस्ट्रिक्शन करा हिची तो आंसर सी हम तापर से प्लान 18 को फाइंड द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन कोड एटा प्रीवियस ईयर उडा अछि चारटा केस देछि देखे इंदिरा साहनी केस मिनर्वा केस गोपालन केस शंकरी प्रसाद केस भल से देख एरा सब ठीक अच्छी तो एटा में जीवा 1992 एटा 1980 एटा 1950 एटा 1951 तके इंदिरा साहनी केसटा रिजर्वेशन आसीबो रिजर्वेशन केस आसीबो इंदिरा साहनी केस रिजर्वेशन आउट है तुम मिनर्वा मिस केस रिवाइवल ऑफ जुडिशियल रिव्यू एटा गोपालन केस है प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ एथरे आर्टिकल 21 रे प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ को गुरुत्व दिया एवं शंकरी प्रसाद रे पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड पार्ट 3 इटा तब आंसर ऑफ 3 तापरे 4 3 4 कोड अछि 3 4 अछि गोटे तो कोन ए भल से देख 3 4 2 1 इंदिरा साहनी केसटा पॉपुलरली नोन एज रिजर्वेशन केस एटा मंडल कमिशन केस कोंटी ओबीसी रिजर्वेशन बाय जोटा अछि एससीबीसी रिजर्वेशन सेटा 27% को जो इंक्रीज कराइतला सेति पे केसटा आइतला एवं ए केस रे सुप्रीम कोर्ट डीटा कथा मेजर कथा कहितले कि रिजर्वेशन 50% ऊपर को जीव नाही एवं क्रीमी लेयर कथाटा को कहितले क्रीमी लेयर प्रिंसिपल अप्लाइकेबल करा जीवो बेली कहितले सेटा होची रिजर्वेशन केस तेनु ए हैला 3 बी रे अछि जो मिनर्वा मिल केस रे पिलाने जुडिशियल रिव्यू को रिवाइव कराइतला अर्थात 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे जुडिशियल रिव्यू को अबोलिश माने कोन जुडिशियल रिव्यू अगेंस्ट रे पास हितला जुडिशियल रिव्यू करा जाई पारिबनी बेली कुहाइतला 42nd अमेंडमेंट एक्ट जुडिशियल रिव्यू को एक प्रकार वीक कर दिया हितला तेनु फुणी ताकू मिनर्वा मिल केस रे ताकू रिवाइव कराला अर्थात रीइंस्टेट करा गला एवं कुआ गला जुडिशियल रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जोटा केशवानंद भारती केस रे कुआइतला कि ता परे भी पार्लियामेंट रे 76 रे 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास है कि जुडिशियल रिव्यू को गोटे प्रकार वीक कर दिया हितला तेनु ताकू रिवाइव कला जेतु मिनर्वा मिल केस वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया तो सेटा होची सेति पई ता ना होची कोन माने डीपीएसपी और मिनर फंडामेंटल राइट रो गोटे फेवरेबल केस सेटा सेतरे दी जन को गुरुत्व दिया हितला
तापर एके गोपालन केस रे आर्टिकल 21 रे प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ को एग्जामिन करा हितला एवं शंकरी प्रसाद केस रे इट इज द फर्स्ट केस ऑन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी तो सेटा 3421 अब आंसर ए हबो 18 रे For under Article 22 of the Constitution, with the exception of the certain provisions stated therein, what is the maximum period of detention for persons under preventive detention? That is 3 months. Sorry, that is 3 months. So 3 months रे हबो 3 months हबो इटा आंसर 3 months हबो B. Preventive detention law under रे जने 3 मास रहिबो जे ता परे रहिबो ताले ताकू गोटे एडवाइजरी बोर्ड जो हाईकोर्ट जज नेतृत्व में बसिकी सी अप्रूव करिवो तेन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ रे जो आर्टिकल 22 रे जो राइट्स गुरा अछि जो प्रिविलेज गुरा मिलुची हमको अरेस्ट हेले डिटेंशन हेले सेटा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ रे अवेलेबल नुह ठीक अछि तापरे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एटा 15(5) रे मेंशन अछि तेणु यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन टा 16 रे नहीं कारण 16 रे जॉब रिजर्वेशन कथा अछि तेणु हमर जो 15 रे आर्टिकल 15 रे जो रही एजुकेशनल रिजर्वेशन जोटा हमें देखुचे एजुकेशनल रिजर्वेशन इज फाउंड मेंशनड इन कौन योर यस अट 15(5) रे अछि एटा 15 क्लॉज 5 क्लॉज 5 रे अछि तो एटा अछि सेटा आंसर हबो ए एटा आंसर ए हबो 20 लास्ट 2 क्वेश्चंस देखिए पिलाने लास्ट 2 क्वेश्चंस एटा ठीक अछि लास्ट 2 क्वेश्चंस 21 and 22 which of the following articles of the constitution of India are exception to fundamental rights under article 14 and 19 then एटा 31 13 C हबो एटा C आंसर हबो 31 A और 31 C 31 ए हैला जोटा एक्सेप्शन अच्छी जोटा हमर कौन 9 शेड्यूल जो 31 ए टा जो अच्छी जो 9 शेड्यूल 31 ए बी सी तीनटा का एक्सेप्शन सी रे अच्छी किछिटा फंडामेंटल डीपीएसपी पालन हैला बेले जदि 14 और 19 वायलेट हैला आगुरु थिला ऑल डीपीएसपी एबे कराला 19 ए 39 बी और सी 39 बी और सी जदि इंप्लीमेंट हेले 14 और 19 वायलेट हबो सेटा वायलेशन रे धरा जीवनी बी टा सेमती अछि जो लैंड रिफॉर्म्स अछि एटा जो अछि हमर कोन 9 शेड्यूल ले जो प्रोविजन गुरा अछि फंडामेंटल राइट को वायलेट होन त सेति पई कुआ जाय तीनोटी आर्टिकल फंडामेंटल राइट रे एक्सेप्शन 31 ए 31 बी 31 सी तो एक्सेप्शन कुआ जाए काहे कि ना सेगुरा सेतिरे जहा जहा प्रोविजन अछि ताकू इंप्लीमेंट करले जदि फंडामेंटल राइट वायलेट हबो ताल सेटा वायलेशन धरा जीवनी सेति कुआ जाए एक्सेप्शन लास्ट क्वेश्चन अंडर व्हिच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स द कोन डीपीएसपी जोटा 39 सी रे अछि बी आंसर हबो बुझी परछु तो माने 39 सी रे अछि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तेन सेति पे सरकार विभिन्न प्रकार योजना करूछंती केमती वेल्थ टा कंसंट्रेशन होबनी सबु वर्गर लोकन को किछि वेल्थ मिलिबो इनकम टैक्स सेति पे कम कर दिया छि जो लो इनकम ग्रुप हला तांको सब्सिडी दिया होछि विभिन्न प्रकार कोन सरकारी सुविधा गुरा सेही मान को दिया होछि जो माने लोअर क्लास इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो माने तेनु एंती करी कि डिकंसंट्रेशन कराउछि वेल्थ रे जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर थिला जो 5% मनी वाज माने in the among the 5% of the people possessed 90% of the money and माने 10% of the money was there जो 95 माने 5% लोक देशर 90% वेल्थ रखिथिले एवं मात्र 95% लोक जोटा कि देशर 10% wealth रखते तमन there was a huge gap between which माने the gap between rich and poor was very large
किंतु वर्तमान धीरे धीरे से गैप कमुची देश में धनी तो रहिबे किंतु गरीब रहिबेनी कई जने माने रिसोर्सलेस पर्सन रहिबनी सेटा होची डीपीएसपी रे लक्ष्य तेणु 39C रे प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कथा कुआइछि 39B रे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस कथा कुआइछि से दुटा इम्प्लीमेंट कले जहाँ भी भायोलेट हम से भायोलेसन जीवन तेणु से आर्टिकल 22 क्वेश्चन है यहाँ ठीक अच्छे पाने तो आज सेसन रे मु यूजफुल जानिली सुप्रभा मंजरी साहू व्हिच बुक बेस्ट सुप्रभा जेकोसी बही फास्ट तो एनसीईआरटी पढ़ जदि बिगिनर्स तुम्हें भावुच ताले एनसीईआरटी पढ़ क्लास 10 रो 9 रो 11 रो 12 रो ठीक अच्छे 9 10 11 12 रो आग जो एनसीईआरटी बही गुरा पढ़ टिके पॉलिटी 9 रो आरंभ कर है इन केस एनी इश्यू प्लीज कांटेक्ट मी बा ड्रॉप द मैसेज यूट्यूब रे आसी कि सेठी पचार दबो जहाँ जहाँ सब आसीबो हैला ठीक अच्छे पिलाने तो मु कहि दोची एटा सेशन बाकी शनिवार दिन हमर सेशन अछि आफ्टरनून रे गोटे मैराथन रहिबो जिते पॉसिबल क्वेश्चन हमें दे परिया था दबा तो तुम मैंने जिते सेशन अटेंड करिवो खाली बसिकी सुनिले भी बहुत किसी हेल्पफुल होबो ठीक अच्छे तो जॉइन द सेशन ऑन सैटरडे बाकी मझिरे बहुत सारा यूट्यूब सेशन अच्छी देखिबो मोर आडा 247 को जो सब्सक्राइब करथिबो एवं सेतिरे विभिन्न प्रकार क्लास अपडेट होउची ताको अपडेट रख ठीक अच्छे एवं सेटा जॉइन कर होला हमरो जो प्रिलिम रो बैच स्वतंत्र भाव आरंभ होउची तो जो माने पॉलिटी ऊपर स्पेशल बैच करिवो से माने इंडियन पॉलिटी डायरेक्ट एक्सेस करि परिवो स्पेशल बैच नले ज्योग्राफी ऊपर जदी कोर्स चाहुचो कि धर कंबाइन चाहुचो पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री एगुरा चाहुचो तो हमर वारियर बैच 2.0 जोटा वारियर बैच गोटे ओपीएससी रो फाउंडेशन बैच जोटा थिला तार 2.0 टा अबे लॉन्च होउची 31 अक्टोबर दिन लॉन्च होउची 2.0 जो वारियर बैच थिला तार 2.0 टा लॉन्च होउची एटा 31 अक्टोबर दिन लॉन्च हम एवं एटार सेकेंड बैच रे ऑलरेडी एडमिशन चली बहुत पिला एडमिशन करछन तो देखिबो एवं एगुरा सब करिकी हमर कोड यूज करिवो Y963 यूज करले तुम यूजुअली डिस्काउंट पाइबो बाकी हमर मेंस रिलेटेड हम बहुत बैच नै के आसुचु मेंस रिलेटेड माने मेंस जीएस मेंस राइटिंग आंसर राइटिंग क्लास एसे राइटिंग क्लास आ तुम जनरल इंग्लिश क्लास ठीक अच्छे बहुत सारा भेराइटर क्लास आस बहुत अफोर्डेबल रोचे बड़े घरे बसिक आराम से क्वालिटी पाठ पढ़ो तो जॉइन कर जो जो मैंने अच्छ बाकी जो मैंने सिविल रे कैरियर आरंभ करने चाहूच से भी बहुत सारा कोर्सेस रही जमती प्रिलिम विभिन्न प्रकार कोर्स लॉन्च हम इंडिविजुअल बैच इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं कि कंबाइन सब्जेक्ट नहीं कि नले वारियर बैच रे जॉइन कले भी तुमको बहुत बढ़िया कारण यहाँ गोटे ऑलरेडी रोची प्रिलिम मेंस इंटरव्यू पीएमआई बैच रोची प्रिलिम मेंस इंटरव्यू पूरा कंप्लीट पैकेज रोची से तुमको 2 वर्ष वीडियो वैलिडिटी रोचे डिस्काउंट अच्छी बाकी तुमर जो पीडीएफ है क्लास नोट है सीटा सब तुमको मिलिबो तो तुम्हें आसिकी भी आमर ऑफलाइन भाया तुम्हें आसी भुवनेश्वर आडा ऑफिस जोटा आईआरसी जो आईडी मार्केट पाखे अच्छी से आसी तुम भेटी पार तो तमाने आडा 24/7 ओपीएससी रे तुम्हें उभय ऑफलाइन और ऑनलाइन रो दीटा एक कॉम्बिनेशन पाउच तेणु तुम सब आसिया दरकार नहीं जिते डाउट रहा केते सार को फैकल्टी मानक भेटिया चाहूच यू कैन कम एंड मीट हियर सो देयर इज नो इश्यू ठीक अच्छे सो कम एंड जॉइन आवर कोर्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल तो आडा ऐप को जॉइन डाउनलोड करो एवं आडा 247 ओपीएससी चैनल को सब्सक्राइब करो यूट्यूब रे आ आडा ऐपटा गूगल स्टोर रु जाइकी बा ऐप स्टोर रु जाइकी डाउनलोड कर दियो सेतिरे करंट अफेयर अपडेट रहउची सब बेले आ तुमरो विभिन्न स्टोर को जाइकी विभिन्न कोर्स ऊपर देखो को कोर्सटा वैलिड होची ठीक अच्छे थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी एवं बेसिकली सबुदिन तो कोर्स अच्छी तेणु से गुरा नजर देव नेक्स्ट सेशन रे पुणी तुमको भेटी एटा कंटिन्यू तो रहिला थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी एंड गिविंग मी ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम योर साइड थैंक यू।